नहीं दिख रहा। रोलिंग और रोलिंग। We are very excited about the film. We've been waiting for a while for it, and it's out there. It's great. It's a fun film, and I hope people love it. Well, it's been a kind of long journey. I never wanted to be a cinematographer, but बन गया और फिर एक के बाद एक फिल्में होती गई. But then Ramu ji actually reminded me. He actually told me that I think you'll make a good director. तो वहाँ से आए वापस से कीड़ा आया. फिर मैं स्क्रिप्ट ढूंढ रहा था तो नवजोत मिले मेरे को. उनका आइडिया था एक्चुअली कि एक कैरेक्टर की कहानी जो अमृतसर में एक सर्विस शुरू करता है, रनिंग शादी. फिर हमने उस पर काम किया और वहाँ से हम लोग स्क्रिप्ट लिखी और देन तापसी एंड अमित केम इनटू द पिक्चर एंड देन शुजित, वी टुक द फिल्म टू शुजित एंड देन वी आर. I think it's very unfortunate, I just feel that, even though, of course, we have to respect the judiciary and the decision, but I just feel it's a little unfortunate on a filmmaker where people just turn up at the last sort of, juncture of a release, and then it's almost like you're pushed to a corner. You have to, your release is at stake. So many people's investment is at stake. And whether you end up fighting the case or not, but you just end up being pushed into a corner where you have to just surrender, and just, and I think it's an unfortunate thing. I feel that, I think there is a Supreme Court ruling that, once a censor certificate is given, there should be no threat to stopping a film release. And I think as a film association and as producers, we should also have some sort of a system where there should be a minimum period that anybody can come up with any objection. Maybe that could be a month before the release. It at least gives us some time to weigh our options, to take a legal route. But it is the way it is, and we respect the judicial order. And we complied with it, and it's unfortunate, but it is what it is. I just feel that anybody can wake up and say anything in today's time, and that's what I feel unfortunate. It's just getting more and more difficult to make films in this country. Everybody has a problem with everything. Then what do we make films on? In my view, honestly, it's a very generic word. .com is not owned by anybody. But देखिए, weakness की बात नहीं है. Everybody has their own things to look out. नहीं, देखिए, प्रॉब्लम ये होता है कि Bollywood is a very time bound process. एक जो फिल्म होती है उसकी रिलीज एक टाइम बाउंड चीज़ है. अगर वो उस टाइम पे नहीं होती तो बहुत लोगों का बहुत नुकसान होता है. एंड आई थिंक वही एक चीज़ लोग यूज इट एज अ थ्रेट परसेप्शन. दैट इज समथिंग दैट इज ऑलमोस्ट लाइक अ इमोशनल ब्लैकमेल दैट हैपेंस व्हेन समथिंग लाइक दिस हैपेंस एट द लास्ट जंक्चर. दिस शुड हैव हैपेंड. 1 महीने पहले होता तो वी वुड हैव मे बी फॉट इट इन अ डिफरेंट वे. मैं बहुत आई रियली वेलकम दिस डिसीजन बिकॉज आई जस्ट फील कि देखिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो डीएनए, लोगों का डीएनए सेम है. ऑफ कोर्स पॉलिटिकल इश्यूज हैं. पॉलिटिक्स ऑन ईदर साइड डिक्टेट दैट सर्टन डिसीजंस आर टेकन डिप्लोमेसी के लेवल पे. बट एज पीपल, व्हाई शुड वी stop enjoying the things that we love about each other? We love their music, they love our films, and I feel आप कोई भी रिलेशनशिप में आप आगे कैसे बढ़ेंगे अगर आप हमेशा पीछे चलते रहे और एक दूसरे की चीज़ें बैन करते रहे? तो ये रिलेशनशिप कैसे आगे बढ़ेगा, ये पीस कैसे आएगा? तो आई फील इट्स अ पॉजिटिव स्टेप. दे हैव टेकन अ स्टेप टू एंजॉय सम ऑफ आवर थिंग्स, एंड आई थिंक वी शुड ऑल्सो मे बी रेसिप्रोकेट. थैंक यू.
हाय गुड इवनिंग। कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कुछ बोलना है क्या? फाइनली आई एम वेरी एक्साइटेड। मतलब मेरा आज शाम से मेरा थोड़ा नर्वसनेस शुरू होगा। हाँ भाई देख रही हूँ उधर, एक सेकेंड। किसके कैमरे में? सेंटर में तुम्हारा कैमरा है इसलिए है। देखिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी पिक्चर रिलीज हो रही है और ये पिक्चर स्पेशली मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह से मुझे पिंक मिली थी। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए लोगों को क्या रिएक्शन होने वाला है। अभी तक सबने मेरे को रोते रुलाते मारते हुए देखा है, अभी मेरे साथ हंसने वाले हैं कि नहीं, मैं ये देखने वाली हूँ। सो इसलिए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये फिल्म और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे पक्का है कि ना आप लोग एक स्माइल के साथ निकलेंगे बाहर, इस बात की गारंटी है। अब वो देखते हैं कि कितनी बड़ी स्माइल से निकलते हैं। पिक्चर चेंज नहीं हुई है। देखिए फिलहाल ना मुझे ना पॉजिटिव थॉट्स की जरूरत है। मैं बाद में देखूंगी जो ऐसी चीजें हैं। मेरी पिक्चर नहीं चेंज हुई है, उसको हिलाने से ये बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट ऐसा कुछ नहीं हो गया जिसकी वजह से पिक्चर रुक गई या और इतना बड़ा कोई चेंज करना पड़ा। पिक्चर में कुछ चेंज नहीं आया। एटलीस्ट आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में बढ़ोतरी होगी तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। उससे ज्यादा मेरा कोई कमेंट नहीं है इस बात पे। For the national anthem before the film starts. I know, I read that. Yeah. As an artist, what do you have to say on that? A lot of people used to complain. Why is it? See, if you do this, then also there's a problem. If you do that, then also there's a problem. So it's better that they have given it to whoever wants to stand can stand. It's their own choice. Let it be. And because you said this or that, you're gonna put me in a controversy. So what's the point? ये मैंने सुनने में आया। आई नो या ये भी सुनने में आया। मैं ये बोलूँगी कि मैं अभी तो 2.5 साल हुआ है मुंबई आए हुए मुझे, और हम लोग हर रोज इसी बात पे कंप्लेन करते रहते हैं, रोड अच्छी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और मैं ही नहीं, सिर्फ मतलब सारे मुंबई वाले कंप्लेन करते हैं। तो वो लोग सारे जो इस बात को कंप्लेन करते हैं, जो दूसरी सिटीज में जाके बोलते हैं कि हमारी सड़कें ऐसी क्यों नहीं है, प्लीज जाके ना वोट कीजिए इस बारी। तब आप ट्रिप करें। अगर आप वोट कर रहे हैं उसके बिना आप ट्रिप करने के लायक नहीं। इट्स अ स्पिन ऑफ। पिक्चर वो देखना ना, वो पिक्चर अभी आने में टाइम है। बहुत बात करूंगी इस पिक्चर के बारे में, मैं ही बात करूंगी इस पिक्चर के बारे में। मैं सारी पिक्चर के लिए एक्साइटेड रहती हूँ यार। बड़ी मुश्किल से अच्छी पिक्चरें मिलती हैं और हम जैसे लोगों को अच्छी पिक्चरें मिलती हैं। तो मैं आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर ऑल माय फिल्म्स। ओके, थैंक यू यार। 1 मिनट कहाँ खड़ी हूँ? 1 मिनट यार, 1 मिनट पहले इधर आ जाती हूँ फिर उधर आ जाती हूँ। ओके चलेगा? I have seen the trailer. It's looking lovely, and 2 very close friends are a part of the film.
Roy, who's the director, and Sadh, he was in my last film. So I wish them all the best, and I hope the film gets all the success what it deserves. फिल्म का नाम चेंज किया गया अगर आपको मालूम है तो क्या कहना चाहेंगे इज इट राइट और रॉन्ग? I think it's very unfortunate in the profession that we are. We have to go through all these things, but at times one has to do what is best for the film because it's so much writing, so much money is involved to releasing a film. So I feel it's in theaters this Friday, and I hope more people go and watch it, empower the film, and we wish them all the best. Well, it's too early right now to speak about it. I'm going to start Tiger Zinda Hai next month. Yes. So that's my next film, and I can just say that we are going on floors next month. Well, it's too early right now to speak about it. No. देखिए अभी बहुत जल्दी है तो मैं बस इतना कहूँगा कि अभी टाइगर जिंदा है की शूटिंग शुरू होने वाली है सो ऑल माय फोकस इज ऑन टाइगर जिंदा है एंड होपफुली इंशाल्लाह इफ एवरीथिंग गोज राइट विल सी व्हाट हैपेंस मैं बस ये कहूँगा आई सेड इट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि फिल्म मेकर्स को इस प्रेशर्स के थ्रू गुजरना चाहिए बट आई वुड रिक्वेस्ट दैट ऑडियंस शुड गो एंड वॉच द फिल्म फॉर व्हाट इट इज and once you get the success which the film deserves, I think that is what is most important. Well, we are very happy, all three of us, Arjun, Ranveer, even Priyanka. It was a special film for us, and we hope, something will come together soon, sometime. Excited for working with Salman again? Yes, it's always exciting to work with Salman. I think, but today is about RunningShaadi. So I just want to wish everyone, all the success. Thank you. Thank you.